बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज अपलोड मैंने नमाज से स्टार्ट किया था, तो आपके साथ भी शेयर करूँ कि पहले नमाज और फिर बाकी काम। नमाज और तिलावत के बाद मैंने फिर मानूर के लिए नाश्ता तैयार किया। उसको नाश्ते में रोटी वगैरह कोई चीज़ नहीं खानी होती, इसलिए एक एप्पल और एक कप दूध का और साथ में ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा देती हूँ। और ये मैंने मानो उठा दिया। इसका यूनिफॉर्म मैंने पहले ही प्रेस करके रखा हुआ था। ये रखते हुए फ्रेश हो रहा है इनका। Two to the 4, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 4 the 10, 2 6 the 10, 2 7 the 30, 2 8 the 60, 2 9 the 2 9. मानो के स्कूल के जाने के बाद मैंने थोड़ा सा मेरे कपड़े रहते थे तय करने वाले वो किए, और फिर नाश्ते के बाद फिर बाकी रूटीन का काम वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लंबा काम हो जाता है। साथ साथ काम करना और साथ साथ रिकॉर्ड करना, इसलिए फर्स्ट ट्राई किया मैंने। इंशाल्लाह आगे से और ट्राई करूँगी। ये मैट्रेस से कवर गिराने वाला था, ये इन्होंने गिरा दिया था। और इधर मैं रोटी वगैरह बना ली थी नाश्ते के लिए, और उसके बाद बाकी सारा काम किया। ये मालूम आते ही मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, जो मानूर को भी दिया और आशू को भी, और साथ में इन्होंने भी किया। काफ़ी टाइम के बाद इन और शुगर हो गया था थोड़ा मसला, तो उसके बाद इन्होंने भी मीठा छोड़ दिया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा कंट्रोल है, तो इन्होंने आज शेक भी ट्राई कर लिया। मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग के साथ या रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करें और लाइक करें।